पीएचडी विद्वानों 2024 ए बैच के लिए अंतर विषयक दृष्टिकोण गुणवत्ता अनुसंधान के लिए एक नया प्रतिमान नामक एक अभिन्यास कार्यक्रम आज विज्ञान और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय मेघालय की NKC सभागार में आयोजित किया गया। डॉक्टर उमा शंकर, प्रोफेसर वनस्पति विज्ञान विभाग नॉर्थ ईस्टर्न हिल यूनिवर्सिटी और डॉक्टर सबीना यास्मीन साइकिया, एसोसिएट प्रोफेसर समाज शास्त्र विभाग गुवाहाटी विश्वविद्यालय ओरिएंटेशन में संसाधन व्यक्ति थे। कार्यक्रम में नव प्रवेश पीएचडी विद्वान, डीन और विभिन्न विभागों की HOD ने भाग लिया। विद्वानों का स्वागत करते हुए USTM की चांसलर मोहब्बुल हक ने कहा, स्रोत विद्वान किसी विश्वविद्यालय के लिए विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है। उन्होंने उन विद्वानों को नकद पुरस्कार देने की घोषणा करके प्रोत्साहित किया जो 2.5 साल के भीतर अपनी PhD स्रोत पूरा कर लेंगे। USTM के कुलपति प्रोफेसर GD शर्मा ने विद्वानों से इस दौरान कहा कि स्रोत की विषय की चयन की प्रक्रिया बहुत महत्वपूर्ण है और अनुसंधान का लक्ष्य समस्या का समाधान करना होना चाहिए। डॉक्टर सबीना यास्मीन साइकिया ने विद्वानों को अंतर विषय अनुसंधान में संलग्न होने की तरीके पर बात की और कहा कि अंतर विषय अनुसंधान जानबूझकर विभिन्न विषयों को देखता है और एक नया एकीकृत तरीका सामने लाता है। अपनी प्रस्तुति देते हुए उमा शंकर ने कहा कि PhD विद्वानों को लक्ष्य निर्धारित करने और उन्हें प्राप्त करने के लिए एक रास्ता तैयार करने की आवश्यकता है। USTM की एकेडमिक रजिस्ट्रार डॉक्टर AH भरभुया ने ओरिएंटेशन कार्यक्रम की दूसरी सत्र में प्रारंभिक टिप्पणी की। डॉक्टर N लश्कर, परीक्षा और प्रवेश नियंत्रक USTM ने PhD परीक्षा नियम और विनियम पर एक संक्षेप सत्र लिया। Social sciences into its domain will be development studies, migration, study of social exclusion, and urban studies, health. We can name many. I have some experiences with urban studies because when in my interaction with my scholars who had wanted to work on urban to understand what is urban, and we had actually try to understand what is urban. We try to bring around. Someone said there's a very new concept coming of space. How sociology would look at space. So we was looking at being sociologists, for example, bringing in the native discipline, but then having this exposure. Space is a concept being used by geographers. So how we use this concept to understand the social world of people. So we move in the world of perception, participant perception, how they perceive that space. Then again we're talking about gender. Gender is very much interesting because it lies at the intersection of disciplines and because of which it is much. UGC says minimum 3 years you should spend and it can go up to maximum 6 years. There are some exemptions for more than 6 years which I said that some of us would like to linger on. 6 क्यों 8 साल 10 साल. In COVID time we got extraordinary extensions. Some of the students in our university also, under me also, I have spent 9 years. Wonderful. You know how much time I took to complete my own PhD degree? You have to be capable enough to compete and grab a job, not a get a job. I never teach my students to get a job. To grab a job. You have to show your capability to the extent that the people should say that this is the guy who we should select. Right? उस लेवल तक उठो. You have to make yourself that much competent. Although in the background I will also tell प्रोफेसर शर्मा साहब, देखिए हमारा एक बच्चा है, आपके यहाँ कोई पोस्ट हो तो उसको देख लीजिए, लेकिन दीजिए मत until he is competent. But this is my message to you. You can write a lot of things, but not